Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Enrol and I'm back. For this video, I want to show you the fastest method to solve what generally students consider the lengthiest question in JEE Advanced 2024 Physics. तो let's talk about the question. मेरे पास एक loop है और यहाँ पे इस triangular region में एक magnetic field है मेरे पास, ठीक है? And the loop is traveling with constant velocity. I want to plot the EMF in the loop as a function of x. X is the distance traveled by the loop. So this was the question. Alright, and most students either left the question या फिर they tried to use some geometry in order to calculate the area, then differentiated the area flux calculation जैसे अपन करते हैं EMF निकालने के लिए. But let me show you, अगर एग्जाम में मैं होता या how you should also approach such questions in the exam. In this particular JEE Advanced 2024 especially, options were king. Elimination of options बहुत useful था इस particular साल में. Let me just tell you कैसे करेंगे अपन. Look at the graphs, okay? The graphs को carefully देखना है. Specifically JEE Advanced, I believe, wanted to use the students to use this method कि EMF और ये जो because x जो है that is VT, right? So EMF और x का जो relation straight lines है, EMF और time का भी relation वैसे ही दिखेगा, just scaled by a factor of v, right? So integral e dt कितना होता है? चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा, राइट? E is d phi by dt, इंटीग्रल e dt, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स. इनिशियली कितना फ्लक्स है इसमें? जीरो. मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है, फाइनली पूरा निकल जाएगा. फाइनली ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और जो लूप है वो बाहर निकल जाएगा. फाइनल फ्लक्स कितना? जीरो. इंटीग्रल कितना होना चाहिए? जीरो. व्हाट इज इंटीग्रल e dt? एरिया अंडर द कर्व, राइट? एरिया अंडर द ग्राफ. किस ग्राफ में एरिया जीरो हो रहा है? दैट इज ऑल वी वांट टू चेक. एरिया मतलब इंटीग्रल ऑफ e dt जीरो हो रहा है. यू प्रॉब्ली हैव स्टडीड ऑलरेडी इंटीग्रल इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व. तो ये तो ऑब्वियसली गलत है, ये पूरा एरिया नेगेटिव है. ये एरिया कट नहीं रहा है, ये नेगेटिव है, इससे ज्यादा है ये एरिया. दिस इतना एरिया और इतना एरिया कट रहा है, तो ये बचेगा, राइट? ओनली ऑप्शन ए रिमेन्स. सो दैट्स योर आंसर. नाउ यू कैन ऑफ कोर्स डू इट द करेक्ट way, correct in the sense this is also correct, but you can do it the rigorous way using mathematics, using a little bit of geometry, calculating the area. But in the exam where every single minute matters, this is the kind of method you have to use. All right. If you want more such kind of solutions, what I call as cute solutions to the real JEE Advanced 2024 questions, let me know in the comment section. I hope you enjoyed this video. That's it for today. I'll see you at the top. Good night.